after Chief Minister Yogi issued an order asking all restaurants along the Kavar Yatra route to display the names of the owners. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has directed the shops in the state to do the same. Meanwhile, opposition is up in arms. India bloc netas have termed the diktat anti-constitutional and illegal. Opposition has accused the BJP of doing politics of hatred and divisiveness. Amid this, sources tell India Today that display name diktat was okayed under the UPA rule, and it was Congress that made displaying names on shop banners mandatory. वहाँ पर बैठक कर रहे थे कांवड़ मेले से संबंधित तैयारियों की। उस दिन हमने निर्णय किया था, क्योंकि इसके पीछे हेतु यह है कि अनेक लोगों ने इस बारे में कहा है कि बाद में कई बार बहुत वैसी स्थिति पैदा होती है कि नाम बदल के लोग जो है अपनी पहचान छुपा के जो है दुकान खोल रहे हैं या कोई अन्य कारोबार कर रहे हैं, तो ठीक नहीं है। सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जो भी है, अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है? यूपी गवर्नमेंट ने कब कहा कि किसी एक धर्म के लोग बोर्ड लगाएं? सबके लिए कहा, सब अपना अपना बोर्ड लगाएं। और ये मेरे पे है कि मैं किस दुकान पे जाकर भोजन लूँ ना लूँ। ये कावड़ मास का महीना है, ये सावन का महीना है, ये महीना है जब लोग सात्विक भोजन करते हैं, जब लोग उपवास रखते हैं। उस बीच में अगर आप मांसाहारी दुकान से कोई भोजन लें, सात्विक भोजन लें, तो वह ठीक नहीं है। ये मेरी जो मूल मेरी आस्था है उसके विरोध में है। उसमें हर चीज़ में राजनीति खोजना ठीक नहीं। दिक्कत है कि उनको हिंदू आस्था के साथ दिक्कत है, और वह हिंदू आस्था का लगातार निरंतर हर बार विरोध करती हैं। कोई ना कोई मौका मिले, जब मौका मिले वह विरोध करती हैं। ये चुनावी हार के बाद भाजपा की हताशा है। ये दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का रोजगार समाप्त करना चाहते हैं, उनका धंधा खत्म करना चाहते हैं, इसलिए ये फरमान जारी किया गया है। और जहां तक मुसलमानों का सवाल है, तो मुसलमानों के जो तेल आते हैं कतर से, खाड़ी देशों से, सऊदी अरबिया से, ईरान से, इराक से, वो तो इस्तेमाल करके डीजे में वहां पे डांस किया जाता है। योगी जी ने ये जो फरमान जारी किया है, ये नफरत का फरमान है, ये इंसानियत के खिलाफ फरमान है, और ये फिर दिखाता है कि किस तरह से आप समाज के वंचित तबके से, दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से नफरत करते हैं। As per norms, everybody engaged in food businesses has to have a license and present it upon being asked by any government agency. And that, as I said, it's for maintaining the standards of safety of food that we buy and consume. But only on Kavar Yatra route, if you are asking people to display their boards, including fruit sellers, including mango sellers, now that's definitely got nothing to do with food safety. That has got to do with the bigotry and the agenda of dividing this society and creating hatred and unrest. This is the agenda of this government. Let it not get confused with the food safety norms which were brought by the UPA. The opposition is up in arms after Chief Minister Yogi issued an order asking all restaurants along the Kavar Yatra route to display the names of the owners. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has also directed the shops in the state to do the same. Meanwhile, the opposition is up in arms, and the India bloc netas have termed the diktat anti-constitutional and illegal. Opposition has accused the BJP of doing politics of hatred and divisiveness. Amid this, sources tell India Today that display name diktat was okayed under the UPA rule, and it was Congress that made displaying names on the shop banners mandatory. Anmol Bali is joining us live on the broadcast. Anmol, give us more details of what exactly the opposition is saying on the Kavar Yatra diktat. On the issue of Kavar Yatra, now the ruling Bharatiya Janata Party government is on the target of India Alliance and their own NDA parties. It was seen that yesterday even the parties, regional parties from Bihar have also condemned this diktat, and amid this the UP government has extended this order to display their names on the names of the shops owners on their boards of the Kavar Yatra has been extended to whole UP. And amid this, the CM of Uttarakhand has also given the statement. He has said he has already placed these kinds of orders in the state. Amid this, the opposition, especially the India Alliance, Congress, and many other regional parties, which is not part of the NDA, are targeting the Bharatiya Janata Party, and they are saying that this diktat is anti-constitutional.
Amid this, the Bharatiya Janata Party, while extending this order, has shown their will, but on the other hand, the opposition will echo this issue in the parliament for the upcoming budget session also. Right. Thanks, Anmol, for joining us with all those details.